वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. टुडेस वीडियो इज़ ऑन बिजनेस ट्रस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 8 मार्क्स तक भी आने के चांसेस बहुत है, तो डोंट लीव दिस वीडियो. एंड इससे अच्छा वीडियो ना आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलने वाला. ऑल यू हैव टू डू इज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना, देर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. वन इज यूनिट होल्डर्स, देन बिजनेस ट्रस्ट, एंड द अदर वन इज स्पेशल पर्पस व्हीकल. ओके, यूनिट होल्डर will invest in business trust will invest in special purpose vehicle. Why do they invest? They get some sort of returns. पहले अपन 3 टाइप्स ऑफ इनकम्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज योर डिविडेंड, सेकंड वन इज योर इंटरेस्ट, थर्ड वन इज योर रेंट. ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट को देगा. बिजनेस ट्रस्ट विल डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स यूनिट होल्डर्स. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है, देन आता है इंटरेस्ट एंड देन रेंट. सेम यहाँ से बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगा, बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को जाएगा. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट टैक्सेबिलिटी, all these 3 kinds of income you can see it is exempt in the hands of business trust. Okay, all these 3 incomes are actually taxable in the hands of unit holders. Clear till here? Just special purpose vehicle business trust को देता है, that becomes exempt. तुम इंटरेस्ट को ले लो या रेंट को ले लो या डिविडेंड को ले लो, तीनों केसेस में व्हेन स्पेशल पर्पस व्हीकल इज गिविंग distributing that income to business trust, it is exempt in the hands of business trust. Okay, जो income in turn when business trust is distributing to unit holders, it is taxable in the hands of unit holders. Till here it is clear no? Perfect. बस डिविडेंड के केस में एक केस ऐसा है जहाँ पे exempt होता है even in the hands of unit holders. When see there are 2 types of scenarios. Special purpose vehicle, whether it is if it is paying tax under 115 BAA, that is 22% wala. If it is paying as per 115 BAA, then it is taxable. Then that dividend is taxable in the hands of unit holders. If it is paying as per normal tax rates, then that is exempt in the hands of unit holders. Only this one bifurcation, बाकी का पूरा same है. First it will be exempt in the hands of business trust, and then that will be taxable in the hands of unit holders. Exempt, taxable. Perfect no? चलो अभी देखेंगे टीडीएस और टैक्स रेट्स के बारे में फॉर ओनली दिस 3 इनकम्स फर्स्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑलवेज योर फर्स्ट कम्स इज योर डिविडेंड ऑलवेज. अच्छा सर, रिमेंबर इट इन दैट वे. ठीक है, सेकंड इज योर इंटरेस्ट, थर्ड इज योर रेंट. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल जब इनकम दे रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, इट इज़ एग्जाम्प्ट राइट. इन ऑल द केसेस इट इज़ एग्जाम्प्ट. दैट इज़ द रीज़न स्पेशल पर्पस व्हीकल को टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. ठीक है, व्हेन यू डिडक्ट टीडीएस व्हाइल गिविंग द अमाउंट, यू विथहोल्ड सर्टेन पोर्शन एज टीडीएस एंड पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. ओके, तो ऑपोजिट बंदे के हाथ में वो टैक्सेबल है ही नहीं. तो दैट इज़ द रीज़न स्पेशल पर्पस व्हीकल कभी भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करता. इट विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट टू business trust, but it will never deduct TDS. Second, when business trust is paying to unit holders, it is taxable, right? In all the 3 cases, it is taxable except for this one case. Okay, since it is taxable in the unit holders, business trust has to deduct TDS. ठीक है, now we are seeing that part. Okay, see here special purpose vehicle नहीं है, बस 2 ही चाहिए, unit holders and business trust. Now you know why. चलो let's understand dividend first. ठीक है, first dividend right. तो unit holders जो है they are divided into 2 parts again. Either that fellow is a resident or a non resident. ठीक है, ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, ये हो गया तुम्हारा रेजिडेंट. सो योर यूनिट होल्डर्स विल बी ऑफ 2 टाइप्स, रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स. ठीक है, सो फॉर नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनी द टैक्स रेट इज 10%. ओके, द अल्टीमेट टैक्स रेट इज 10% ऑन डिविडेंड. TDS ऑल्सो यू विल डिडक्ट 10%. क्लियर नो? हो गया बात डिविडेंड का. इंटरेस्ट का हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी का एक्चुअल टैक्स इज इटसेल्फ इज 5% ऑन इंटरेस्ट. TDS also you will deduct 5%. I'm talking only about non-residents and foreign companies. Okay, then comes is your rent. Normal tax rates के ऊपर टैक्स होता है. नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी को नॉर्मल टैक्स रेट्स. ओके, सो यू विल डिडक्ट TDS एज पर रेट इन फोर्स. ओके, फर्स्ट डिविडेंड 10%, देन इंटरेस्ट 5%, देन रेट इन फोर्स. ओके, दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर. 10, 5, 4. सी रेट इन फोर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट. वो हायरार्की है. दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर. बट फॉर रेजिडेंट्स नो, इट इज ईजी टू रिमेंबर. सी रेजिडेंट्स नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होता, TDS 10%. रेजिडेंट्स नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होता, TDS 10%. रेजिडेंट्स को नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होता, TDS 10%. ईजी राइट? टिल हियर यू अंडरस्टूड नो? ग्रेट. ओके, चलो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. यहाँ पे एक ही चीज़ को याद रखना, ठीक है, अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल पे कर रहा है 115 BA में, दैट इज़ 22%, then it is taxable in the hands of unit holders. If it is paying as per normal tax rates, that is 30%, then it is exempt in the hands of unit holders. डिविडेंड को बाकी का तो सेम है, यहाँ पे exempt होगा, यहाँ पे taxable होता. परफेक्ट. चलो
Next, we spoke only about three incomes: rent, dividend, interest. What if business trust is earning other incomes also? What if business trust is earning other incomes also? Earlier क्या था, पूरा जो भी इनकम इसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता था. दिस थ्री इनकम्स आर एग्जेम्प्ट. बट अभी वैसा नहीं है. अदर इनकम इज टैक्सेबल हियर इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ओनली. और ये इनकम जब यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता, दैट विल बी एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. ठीक है, ओनली थ्री इनकम्स को याद रखना: इंटरेस्ट, डिविडेंड, the other one is rent. Okay, in these three cases, in the hands of business trust it is exempt, in the hands of unit holders it was taxable. But when it comes to other income, no, it is taxable here only. It is taxable here only and it will be exempt in the hands of unit holders. Perfect. चलो, now other income में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया तो क्या? ठीक है, 112 अप्लाई होता है. ठीक है, विथ इंडेक्सेशन इज 20%, विदाउट इंडेक्सेशन इट इज़ 12.5%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में 15%. नाउ द रेट हैज़ बीन चेंज टू 20%. ओके, एंड इन ऑल अदर केसेस इट इज़ मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74% कुछ रहता. दैट रेट इज़ अप्लीकेबल फॉर एनी अदर इनकम. ओके, ओनली फॉर दीज टू इनकम्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म, अपना अपना रेट अप्लाई होता है. बाकी के जो भी इनकम होता है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे होता है. परफेक्ट क्लियर. अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, तो योर बिजनेस ट्रस्ट इज़ ऑलमोस्ट ओवर. इसमें से ही क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछता है. यू शुड मेक श्योर दैट आप अच्छे से आंसर लिख के आ रहे हो. ठीक है, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज. बहुत अच्छा से नोट्स बनाया, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स. इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ओके, बस अगर समझ में आ गया तो लाइक मारना और सब्सक्राइब कर लेना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तब जाके मेरे को मालूम चलता कि यू नो माई वर्क इज़ आई एम डूइंग द राइट जॉब. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट आता है बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स के बारे में. ठीक है, इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट होल्डर को बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना है, देन यू हैव टू सी द पीरियड ऑफ होल्डिंग. पीरियड ऑफ होल्डिंग बिजनेस ट्रस्ट का, इफ इट इज़ होल्डेड फॉर मोर देन 12 months, it becomes long term. Less than 12 months, it becomes short term. Earlier it was 36 months, but that has been changed to 12 months now. बस 12 months का याद रखो. अगर 12 months से ज़्यादा है तो it becomes long term capital gain. 12 months से कम है, it becomes short term capital gain. Then short term capital gain के rates 15 and 20% that we have discussed. capital gain में और अच्छे से पढ़ते हो तुम. और 112 अप्लाई होता है. Since it is, पहली बात तो you should see whether it is listed in any recognized stock exchange. अगर listed है देन लॉन्ग टर्म के लिए 112 है, शॉर्ट टर्म के लिए 111A अप्लाई हो जाता है. राइट, अगर वो इफ़ इट इज़ नॉट लिस्टेड देन नॉर्मल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी अप्लीकेबल. क्लियर नो? परफेक्ट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज इनकम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, अगर बिजनेस ट्रस्ट इफ़ इट इज़ पेइंग एनीथिंग टू यूनिट होल्डर्स एज रिपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. बोल रहा क्या? एज अ रीपेमेंट ऑफ डेट कुछ अमाउंट दे रहा अपना यूनिट होल्डर्स को, देन दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. नाउ अंडरस्टैंड. ठीक है, पहला एक यूनिट होल्डर ने 50 रुपीज़ दे के ही हैज़ गिवन 50 रुपीज़ एंड परचेज द बिजनेस यूनिट्स. इन 25-26 दे पेड 25 रुपीज़. बैलेंस कितना बचा? 25. इन 26-27 नो दे पेड 30,000 टू इट्स यूनिट होल्डर्स अगेन. एक्स्ट्रा कितना हो गया? ये 5. ये 5 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स. Okay, and then in 27-28 they paid again 20. Okay, the entire 50 is already exhausted, so the entire 20 will be taxable in the hands of unit holders. Okay, just remember this point. बाकी पूरा हो गया तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट. इतना ही है, अच्छे से देखना और एक बार देखना. अगर कन्फ्यूजन है और एक बार देखना वीडियो स्टार्ट से एंड तक. एंड आई एम श्योर दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स. एंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दिस. लेट्स गो. Please do subscribe and see you guys in another video. Bye bye.